Sheenu, welcome to Teddy Tadka. Hello, thank you. You're looking very beautiful. Yeah, do I really look so? Yeah, seriously. Thank you. Thank Okay. you so much. Sheenu, tell us the character of आस्था. आस्था के कैरेक्टर में ऐसे आपको क्या लगा जो मतलब आपको लगा ये आपको करना चाहिए? आस्था और शीनू बहुत सिमिलर है. बहुत in terms of everything. मतलब in real life also I am like that. I am आस्था. मुझे उसकी clumsiness है, उसकी bubbliness, the choppiness, you know, the kid in her is still there. The kid in me is still there. She's stupid, but दिल की बहुत प्यारी लड़की है. दिल की साफ है. मतलब she cannot see anybody in pain. मतलब उसको help करना ही है. So all these things I wanted to be very choppy. I wanted to be Shreenu on screen. जो मुझे आस्था में नजर आया था, तो इसीलिए मैंने आस्था किया. Okay. How did you back the role of Astha? Actually, after my previous serial, I took a break. Yeah. मैंने 6 months का break लिया था. उसके बाद suddenly I kept getting calls from this production house, and this was the production from where I started working. Okay. गुलाल में मैंने cameo किया था, तो वो मैं उनको ना नहीं कह पा रही थी. तो in spite of me not wanting to do it, it happened. Okay. So everything till now in my life, actually in this industry, has happened by fluke with me. So even Astha happened with me by fluke. Again, I didn't know that this is going to be the second season. I had that innumerous number of look tests and mock shoots. So finally, even after we started shooting, नाम बाद में जाके decide हुआ था. So this also happened by fluke. Okay. And Astha, tell us, as a Sheenu, you tell us something like, what the best part of being an actor? Best part is I seriously don't know. I mean, how to reach to other people through your emotions. I think that is the best part an actor can present to an audience. मतलब अंदर कुछ चल रहा है लेकिन आप बाहर दिखा कुछ रहे हो. You are not happy, but you have to show that you are happy. Yeah. I think that is the best part of being an actor. You know, I mean, it's a feeling that no one can, except for the actors, can explain to anybody. So to reach up to the fans and to express ourselves, I think that is the best part of being an actor. ओके. एंड अभी मतलब पहले तो इस पे आपको सीज़न 1 बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो ये चैलेंज था कहीं पे कि या कुछ प्रेशर था या कुछ? प्रेशर तो नहीं था क्योंकि हमें पता ही नहीं था. जितना झटका ऑडियंस को लगा था उतना ही झटका सेम हमें भी लगा था. बिकॉज वी डिडंट नो टिल द एंड दैट दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द सीरियल. सो एंड बिसाइड्स एक्टर्स के हाथ में यही होता है यार, हम एक्टिंग करो बस. बाकी कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट. मतलब you know, there was a lot of negativity in the initial this thing when the promo got released. But now people have accepted us with whole heart, and you know, wholeheartedly we're accepted and we're being loved. You know, we cannot go and tell the channel to change the name and stuff like that. So all we do is just work hard and give your 100% every day, which my whole team does every day. And I think that is what is very obvious in our ratings also. In spite of, you know, all the odds, everything, we are doing ourselves. So that is more than anything. I mean, all that matters in the end is satisfaction and that appreciation that the audience gives us. एंड टफ क्वेश्चन कि आपके क्लोज टू योर हार्ट कैरेक्टर कौन सा है टिल नाउ? टेलीविजन या इन टेलीविजन? या अभी फिलहाल तो मेरा ही कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल आई कैन सी माई सेल्फ इन हर. सो आई वुड रियली वांट दैट जितनी स्ट्रॉन्ग मैं हूँ रियल लाइफ में, आई कैन ब्रिंग दैट मच स्ट्रेंथ इन आस्था's कैरेक्टर एज वेल. अभी लास्ट मैसेज टू योर फैंस कि आगे क्या देखने को ऐसे इंटरेस्टिंग मिलेगा उन्हें? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ. आप लोग आगे जो देखने वाले हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस की बहुत ज़्यादा ऊपर है. तो तब तक आप लोग सब देखते रहिए इस प्यार को. क्या नाम दो एक बार फिर. थैंक यू सो मच.